Hello students, how are you? And hoping then that you are very fine at your home and you are enjoying the online study. Last time we are discussing about the colligative properties, and I have told you that there are four types of colligative properties. One is relative lowering of vapor pressure, second is elevation in boiling point, third is depression in freezing point, and fourth is osmotic pressure. In the last video, I have explained you the colligative property, that is relative lowering of vapor pressure, and I have explained you that how we can calculate the molecular mass of the solute with the help of that property. Now second property is elevation in boiling point. Now in this topic, that first we know that what is boiling point. The boiling point is the temperature at which the vapor pressure of the component becomes equal to the atmospheric pressure. The temperature is called boiling point. So that means when any solvent or solution has to be boiled, and when its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure, that point is called the boiling point of that component. Now, as we have said, it is elevation in boiling point. So, boiling point की डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर कर दी. एलिवेशन मीन्स दैट इज राइज. इसका मतलब क्या हो गया, कुछ बढ़ना है यहाँ पे. तो मैंने यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो की है. इसके अंदर जो है एक्स और वाई एक्सिस अलोंग जो है एक्स एक्सिस अलोंग टेम्परेचर एंड वाई एक्सिस के अलोंग जो है वेपर प्रेशर. नाउ बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सॉल्यूशंस, so there are mainly two components, solute and solvent, and we are supposing solute as a non-volatile. So in case of non-volatile solute, the vapor pressure is only due to solvent. So we have to discuss here solvent and solution. So we have to take solvent and solution. Now in this case, when with the rise in temperature, the vapor pressure goes on increasing. Suppose this is the temperature and is the vapor pressure. So with the rise in temperature from this to this, as you move from this to this, it means temperature increases and the vapor pressure also increases. From we go here, temperature this one and vapor pressure this one. So this P is called the atmospheric pressure. So when vapor pressure of the component becomes equal to atmospheric pressure, that point is called the boiling point. Now in case of solvent, at point E, the vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure, and in case of solution, it becomes equal to vapor pressure or atmospheric pressure at point F. So it means this is the temperature at which a solvent and a solution starts boiling. So because it is solvent, it is only one component solvent. So T naught, T the temperature at which the solvent start boiling, because it is a pure solvent, so it is T naught. B stands for boiling point. Similarly, in case of solution, TB, T the temperature at which the solution starts boiling. So difference between these two is delta TB. It is delta TB. So प्योर सॉल्वेंट के केस में हमें सॉल्यूशन को ज्यादा हीट करना पड़ेगा उसके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए जो है. तो इट मीन्स सॉल्यूशन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन प्योर सॉल्वेंट. सो it is then the elevation in boiling point, because ये प्योर
का था, ये हमारे पास सॉल्यूशन का था। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी नोट माइनस टी बी, दैट इज द एलिवेशन, यानी कि इतना टेम्परेचर यहां से लेके यहां तक बढ़ गया, to that region it is called the elevation in boiling point. So here we discussing elevation in boiling point. It is given by this one. Now for P is the atmospheric pressure. The rise in temperature is directly proportional to the decrease in vapor pressure, and since dilute solution, the decrease in vapor pressure is proportional to molarity of the solution. कि जब टेम्परेचर राइज करेगा तो वेपर प्रेशर के ऊपर इफेक्ट डालेगा, और ये वेपर प्रेशर डिपेंड करता है मोलारिटी के ऊपर जो है। तो इस केस में जो है दैट ए dilute solution decrease the vapor pressure is proportional to the molarity of the solution, and delta T is also related to the molarity of the in the same way. So it means delta T B is proportional to M, because that is for a small range of concentration the rise in temperature is directly proportional to the decrease in vapor pressure. कि अगर जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिक्रीज इन वेपर प्रेशर. सो अकॉर्डिंग टू दिस वन द dilute solution, the decrease in vapor pressure is depend upon the molarity of the solution. So delta TB is proportional to M, where M is the molarity of the solution. So where K or it is also equal to delta B equal to KB into M, where KB is called the molar elevation constant. It is called molar elevation constant. Now this relation stands for the elevation in boiling point. Now how can we prove that it is a colligative property? Now what is this? Is elevation in boiling point, this is constant, and this is molarity. According to definition of molarity, it is defined as the number of moles of the solute dissolved per liter of the solution. Number of moles of the solution. So molarity is also depend upon the number of moles. It means delta TB is directly proportional to number of moles of the solute. So hence it is a colligative because it depends upon molarity. So according to definition of molarity, which depends upon number of moles of solute, as it is a colligative property. So it is a colligative तो ये हमारे पास प्रूव भी हो गया, इट इज ए colligative property. Now molar elevation constant delta TB equal to KB into M.
when, or we can say if m is equal to 1, that is molality is equal to 1 mole per liter, then delta TB is equal to KB। यहां से KB मोलर एलिवेशन की डेफिनेशन आ गई। सो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज when molality of the solution taken as 1, it becomes equal to elevation in the boiling point of the solution। so यहां से डेफिनेशन निकाल सकते हैं इसके अंदर जो है। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम इसके बेस के ऊपर जो है एज डेल्टा सीबी इक्वल टू केबी इंटू एम एंड मोलैलिटी इज गिवन बाई डब्ल्यू बी अपॉन एम बी WA अपॉन 1000। ये मोलैलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिलेशन जो है, जब हमने मोलैलिटी को एक्सप्लेन किया था तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा फार्मूला था। तो अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दें, सो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू MB अपॉन MB। इस 1000 को ऊपर ले जाए हम लोग अपॉन WA। अब हमें इसमें से MB, जो सेकंड कंपोनेंट B का था, हमने सॉल्यूट के लिए कहा था, तो MB अगर मेरे को निकालना हो, MB इसको मैं इधर ले आऊंगा, इसको यहां ले जाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WA। तो ये मोलर मास निकालने के लिए फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक फार्मूला आ गया। ठीक है, अगर मोलैलिटी को हम यहाँ पे ग्राम्स में लेके चल रहे हैं तो हमारा रिलेशन ये होगा। अगर हम इसको किलोग्राम के अंदर ले लेंगे, इट बिकम्स KB इंटू WB इंटू डेल्टा TB इंटू WA। तो ये मोलिक्यूलर मास निकालने के लिए फार्मूला है जो हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यूज करते हैं। तो इससे आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो पहली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की थी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, उसमें भी हमने जो है मोलिक्यूलर मास निकाल सकते थे। इससे भी हम मोलिक्यूलर जो है दैट द मोलिक्यूलर मास ऑफ द solute, MB is molar mass of the solute, KB is molar elevation constant, WB is weight of the solute, delta TB elevation in boiling point, and WA weight of the solvent। and molar elevation constant is also called ebullioscopic constant। KB को हम molar elevation constant या ebullioscopic कांस्टेंट, तो इन दोनों नाम से भी हम इसको, चाहे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कह दो इसको, चाहे एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कह दो, तो दो तरह से इसको लिखा जा सकता है। यहाँ से हमारे पास जो है मेनली जो है फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट
यूजिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक था। इससे नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में। थैंक यू।